कितना पैसा बन सकता है कंटेंट में, कंटेंट क्रिएशन में? Every year we lose around 10 to 15 lakh rupees by just not taking ads which we cannot take. Pre-COVID I just quit my job. अच्छा, कि like our company चालू करूँगा. Whereas some guy in China was like, I And will. this is Waymen. Yeah, this is Waymen. हाँ. And some guy in China was like, I am going to end his whole career. Immediately, some guy is a bat in his hand. हाँ बेटा. If you had an option, हाँ. you could have all male followers, all female followers. What would you pick? एक तरफा प्यार. हाँ. की ताकत कुछ और होती नहीं नहीं, कोई ताकत नहीं होती उसमें. कोई ताकत नहीं होती. इससे बुरी चीज आप अपने साथ कर नहीं सकते. वेलकम टू द चिलर. It very hard to acknowledge myself as a creator. अभी भी? हाँ अभी भी. मतलब एक्चुअली दी एजेंसी. ये अच्छा आदमी घटिया आदमी बोलने के बाद भी वो सब तो यार वो है, एंगेजमेंट ट्रैप्स है, राइट? क्या करते हो? और So we run my startup is vegan, right? So I make the sneakers, right? We make wallets, we make bags. It's a full-fledged startup in the sense that we intend to be a D2C startup. We intend to raise money. We are in talks with investors. We're talking to VCs. चालू है, बंद है? चालू है, रोल हो रहा है. पक्का? अच्छा ठीक है. नहीं, मैं कहा ऐसा ना हो यार, सारा माल मत्ता निकल जाए. नहीं, अरे हम ये टीम फिर भी बेहतर है. मेरी टीम आधे सर रोल करना था क्या? और रोल कर दो सर, रोल कर. अरे भाई, दिल्ली में थोड़ा सा सेफली बोलना पड़ता है, पता चले पीछे कोई बैठा है चाकू को लेके. So I used to work at Lens. माइक सही है ना? आप कंटिन्यू करो भाई. अच्छा. वो सब रोलिंग है भाई, टेंशन मत लो. So I was at Lenskart and I used to work as a product manager, right? So even when I started making content, I made it as if like कि ये तो शौक है. It was never like work. I also never tried to monetize it much. मतलब अभी जाके I've started to make some money out of. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. No, that's fine. ये सब रोल हो रहा है ना? हाँ ये होना चाहिए. ये सब चाहिए भाई. ये होना चाहिए. पीछे ये सब हमें चाहिए. एक आध आदमी लड़ जाए ना, अगर हाँ. तो मजा आ जाए. ऐसे कैमरा पहनो, मार रहा है एक दूसरे कर लो यार. मार काट दो उधर. तलवार लेके भाग रहा है एक पीछे से. दिस इज दिल्ली, क्या पता. anyway I don't want to. उस बैग में है अभी एक. आप लेके आए हो? सेफ्टी पर्पस आपके लिए भी जरूरी है. छोटा था, चक्कू लेके घूम रहा है. पेपर स्प्रे. गाना गा दो अब. मुंह के पास रखना है. ये तो बड़ा यार अजीब है यार. मतलब दिस इज फाइन. तो और पीछे क्या मतलब वो घुस जाया यार तू गेन बढ़ा यार, तू गेन. Is it fine? So I am not used to this. It's too close to my face. Oh. Yeah. I am scared of intimacy. यार ये Scared to. लोग बड़ा अलग वे टेंजेंट पे ले जा रहे हैं. सही मायने में चिल्लार हो रहा है ये तो. I'm scared of intimacy, man. You're not used to this close. I'm talking about mics. हाँ माइक की बात कर रहा था. मैं माइक की बात कर रहा था. क्या बात कर रहा है यार? But your content is very different from the rest of Instagram, if I may call it, because I don't think I've seen. तारीफ नहीं लग रही मुझे. अरे तारीफ ही है भाई. अब आप बोलना पड़ेगा. कंटेंट इतना खराब है कि हर तारीफ लगता ही नहीं. हर तारीफ बोलना पड़ेगा कि ये तारीफ हो रही है. अब थोड़ा आप समझो, थोड़ा जनता समझेगी. But it's really very different from the rest of Instagram, because एक तो we were speaking about edits, right? Like the way you edit your videos. Oh yeah. Bhai, it's phenomenal. It is absolutely phenomenal. And you were telling me the other day about, you having a team of editors. बता दो वो थोड़ा क्या है? What's your criteria? How do you hire editors? So there is no criteria. We actually hire people who it's actually a reverse criteria. So if somebody comes to me and says कि they vote for you, I will not hire them. क्यों? Because the problem is if they vote for someone else, they come with a preconceived notion of how to edit. तो fresh बंदा ही चाहिए. Yeah, I tend to hire fresh people who either worked freelance but have not worked with somebody, so they've not got any ideologies in their heads. Because we tried to hire from very remarkable people like Tech Burner. We tried to hire from AVTV cohort. They're very well, but the problem is when they come, they have already they have preconceived notion of how you're supposed to edit all of those things. I think AVTV guys are obviously much more remarkable. AVTV, yeah, good job guys, right? They're actually setting their editors up with a very high quality, right? And Varun Maya again,
very good job, right? So but otherwise when they, so if you see the way we edit videos, you have to think very differently, right? Ki like if this was the setup, इसमें भी यहाँ से you can pop out, यहाँ से pop out, put me in a truck, put कहाँ you से in a आया वो truck. दिमाग, कहाँ से आया वो वो तो मेरी दिमाग? गंदगी आपका है, चला वो है? मेरी गंदगी है, हाँ, right? That is me. आपको चुल है। Yeah. Because like the even if the video is like क्यों है इतना चुल? I don't know, right? The problem is ki I want to obviously make it like what can we do more. My mentality has always been ki like, okay, if this is here, what can we do better? We should put coffee here, we should put this, maybe you should put a prop here. My brain works like that. So we start the edits always, I always start the video saying ki when they are editing, I said इस बार simple edit करेंगे, right? It takes too much time, we're putting too much energy, we don't need this, right? We're not Netflix, we don't need to, and this is a small shorts video, इसमें क्या इतना करने की जरूरत है? And start like this, they edit normally and they're like, एक ट्रक अगर निकल जाता पीछे से यार तो डाल दे अच्छा ट्रक के अंदर ही मेरे को बैठा दे. It starts like that. And I used to obviously edit my own videos in the early days, not at this level of skill. My early edits were very choppy. Once I got a couple of people who were much more skilled than I was, and similar mentality, all people who think about weird stuff, right? And once we ये start, खोजना भी एक आर्ट है। yeah, it's actually that is a hard कैसे part. खोजते हो जो आपके जितना पागल हो? I think it's we do a पागलपन ही है, हाँ if पागल I एक may call बहुत it? बिल्कुल बिल्कुल एंड इसके बाद मैं सीधे पागल खाने ही जा रहा हूँ बट कोई ले जाए यार मुझे, एक्चुअली मैं बड़ा सुकून मिलेगा मुझे. आगरा से But आते हो आप? उधर से मुझे मेरे चक्कर में हटा दिया उन्होंने कि यार ये. तो द थिंग इज कि वी डू अ ह्यूमर टेस्ट. हाँ, We don't test. you do a humor test? Yeah, we do a humor test. कैसे करते हो We so यार? थोड़ा बताओ यार मेरे को। अंकित भाई बड़े इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो आप, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है भाई बात करके। बताओ क्या होता है ह्यूमर टेस्ट, क्या होता है? so in a दिस इज अ टेम्पलेट फॉर ऑल द कंपनीज हायरिंग पीपल। ह्यूमर टेस्ट बताओ क्या होता है So भाई? in a humor test, what we do is that we actually set up a few jokes that we have. Like in basically we, it's very complicated to explain because there's no standardized template for it. But we know the process, which is that we do three things. One, we have a couple of videos that we really like from, let's say, AIB era and stuff like that. One is that we give them a video that we like of people who have great sense of humors, including like international creators like Dave Chappelle and stand-up comedians like Dave Chappelle, and then we give AIB and a lot of stuff, and we ask them, why is this funny? Why do you think this was funny? Why is it funny for you? Why is it funny for other people? So we do one technical round in that format, that we try to understand कि इसको humor समझ में आता है उस तरीके से या नहीं, right? The second we try to do is, in the first 15 days of probation, we spend an extra. So in my office, I'm not like under, if I'm, unless I'm under a lot of pressure, then I'm very normal. But other than that, I'm like, you know, like I'll give you an example. Like sometimes the editor is sitting and chilling and doing work, and I'll order camel milk and ki like ye le utni ka doodh tune manga tha. There's no, obviously he did not ask for it. None of we do some weird shit inside the office in that sense. Ki like we're always trying to be funny. One thing that we have inside the office is that we go on Blinkit and we find the weirdest things to order, and we order it for each other and give it. Like sometimes somebody will come into my office with something like really weird. Like they'll find some like I think camel milk is something has become very common, right? Ki like weird milk, like goat milk. Somebody's trying to find goat milk. Ki sir aap ek baar ye, and they'll just leave, no They just context. keep it and leave. Yeah. Ki like sir goat milk, right? You asked for it, and we actually embarrass each other. Like if somebody's like, "Arey तूने utni का दूध मांगा था ये camel milk?" Does it happen in between meetings as well? Yeah. Often in between meetings. Actually, we try to find hours when somebody's like, yeah. अच्छा वो सामने वाला बंदा सोच रहा है Yeah. अच्छा And उड़ने like, का दूध पीता है you know, तू? somebody's like, if somebody's new and you know, there is a like coffee is being served and the person takes a sip, the other, अरे पी ली, अरे इसमें तो जहर था. So you know, we tend to do a little bit of humor our own self, and we try to see in the first 15 days. It's actually, I'll be honest with you, companies will not be excited to hear this. Our hiring process is very weird in that sense कि like you need 15 days to figure out the person. So when I hire people, what I say is, interview में आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे. 15 दिन full paid, no probation, reduced salary, nothing like that. Proper salary, but 15 days be very aware that your job can go. If you have that kind of luxury, only then join. So if somebody is switching from one job to another, we often tend to not hire them because उसमें होता है कि यार मैं इस job में हूँ, मुझे अगर यहाँ आना है तो I need some surety. We end up not hiring them. We need 15 days of spending time with that person to figure out if their sense of humor matches ours. ले आ जाओ लंच कार्ड पे फिर।
so like I think I started D2C, right? हाँ. Like okay, so we started because I all my life I worked in like startups or as agency. My logic was that instead of I had two options, right? So do a job or like start my own company, and starting my own company was not an option actually. It was actually something which I think I started the company at the worst time possible as well, like pre 2020 अच्छा. January, like Oh. like pre COVID I just quit my job. अच्छा. कि like our company चालू करूँगा. हाँ. Whereas some guy in China was like, I And will. this is Waymen. Yeah, this is Wayman. हाँ. And some guy in China was like, I am going to end his whole career. Like immediately some guy with a bat in his hand. हाँ बेटा. कर तू startup कर. हाँ. So I did the worst thing possible. I think I quit in mid December, right? And 15 दिन कुछ किया नहीं. पहले मैंने जॉब छोड़ने के बाद किया. पहले रिलैक्स कर लेते हैं. And then Jan May I went out to factories to understand how to manufacture a sneaker. And by March we were in lockdown, right? All lockdown, nobody did anything. This is when I started content. This is when So 2-3 years back. yeah, 2-3 years back I started making post. After watching Akshar Patak and a couple of other guys like there was Naveen was there. Pranav Sapra. Pranav Sapra and Naveen, right? These were the guys, but Akshar Patak primarily. And I couldn't do his level of humor, so I ended up doing my own way of doing it, and I did very well actually. As a static creator, I enjoyed more. I think I went from like 0 to 220K in a matter of 3 or 4 months as a static creator. Oh, that's Yeah. pretty good. Yeah. That is pretty good. And static ke time pe to there was no reach in post, right? So you can only get share. Like I remember that story shares came in front of me, right? See, like when I started making content, that was around the same time story shares became possible. And you can imagine like the other creators like Sagar Kazam and all these guys, they probably made content before story shares was possible, which means it was harder to get views. So somebody puts your post on a story, at least everyone sees. They share it to friends. That is, you need way more shares to get reach. Right. And which is why a lot Content naturally फिर वो बहुत shareable होना पड़ेगा. yeah, you have for that to happen. You have For to that manufacture relatability. At least back then everyone had to manufacture relatability, like to think a lot about ki, like what do I say so that this person sends it to another person, warna content nahi chalega. And this helped me a lot, by the way. Like this was the best learning that anyone could have, because on reels you can, if you, there is another kind of reel which kind of just gets a lot of reach. It does not have, it's highly viewable content. So I think reels is where Instagram is now bifurcated as well, right? So like YouTube, there's no share. There's nothing like that. So all YouTube creators, if you look at them, they're very view centric. What do I do to get views? Right? So excessism is one way of getting views. So look at Mr. Beast. The best, I think the most standard formula of getting views is to be excess, right? So instead of having one water bottle, let's have 80 water bottles. Not just 80 water bottles, all different companies. Let's try all of them. Let's say which water was the best. Immediately, that is the kind of content that would do really well on YouTube. Whereas on Instagram, if you want to do well, you still need to make content that people would share to somebody. But still, now that the Instagram algorithm is a little bit learning from YouTube, that is what I assume. So now you can see a lot of YouTubers doing well on Instagram as well, where their content is very viewable. It's not shareable. So you see, if you go through reels, the standard reel, like agar koi naya account banao and it has none of the algorithm training, you'll see most of the content just viewable. It's not shareable. Like you'll just look at it, you'll say, हाँ मैं इसको देख लूँगा 30 सेकंड के लिए. I would not comment. I will not do anything. I just like and then move forward. Correct. Which is also how TikTok content works, right? It's either cringe or whatever, but it's very viewable. Cringe है TikTok content. हाँ है, मतलब I'll be and अब वो इधर आ भी गया है, उसको रोक भी नहीं सकते because the Reels cringe लगता है आपको? Yeah. I think I think all content creators will be cringe to somebody. We have to acknowledge that first. Diplomacy हो गई. हाँ नहीं मतलब we will be. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप content बनाओ और किसी को cringe ना लगे. Diplomacy हो गई है. ऐसा कोई content creator है ही नहीं. आप किसी को भी उठा लोगे ना, even the whoever we think is the best in India right now, अगर आप उसका नाम उठा लो, somebody will come and they will say cringe. So we are all going to be cringe a little bit for a lot of people. But yeah, जो pure TikTok का content अभी भी Instagram पे आता है, that ends up being cringe. Although people misunderstand it a lot, in the sense that it's not cringe because it is either cheap or it is
cheaply manufactured. As a matter of fact, content that is low quality and cheaply manufactured can be the funniest content. And the most viewed content हाँ, also. and the most viewed content as well. So I think a lot of people get it wrong. I think it's only, I think वही वाली चीज़ है जो अभी मूवी वाली भी बात कर रहे थे कि if the humor is natural, if it is situational, then it doesn't feel cheap. Whereas if it is forced, एक हाँ, ऐसा forced होने से फिर वही जबरदस्ती. एक ऐसा जोक मार दूं मैं कि लोग हंसें, तो आप मत करो ये करने से ही आपका सारा का सारा प्रोग्राम भाई खराब मैं है. तो आपका एक बार ना वो जब आपने बोला था कि एक तो कोई वीडियो में बोला था आपने कि क्या मैंने अपने एडिटर को पांच पांच घोड़े दे दिए फिर भी क्या क्या था वो लाइन. भाई मैं फ्लिप कर गया था. मैं इंट्रो में हंस गया भाई. मैं एकदम मैं पूरा वीडियो देख ही नहीं पाया. मतलब सोचो दिस बिकेम सो काउंटर इंटुइटिव दैट इट इज सो फनी दैट आई कुडंट वॉच इट. मैं हंस गया. मैं कहा शिट यार. Dying from success. हाँ मैं कहा शिट यार दिस इज सो फनी. आई वाजंट एबल टू वॉच द फुल वीडियो. मैं कहा भाई ये क्या बोल गया बंदा. आई हैव टू रिकवर फ्रॉम दिस टू एक्चुअली वॉच द फुल वीडियो. There's a series नहीं of मैंने अपने एडिटर को 4 घोड़े दे दिए लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा. मतलब भाई इट इज लेजिट फनी. मतलब आई डोंट मैंने नो. ब्रांडिंग एजेंसी को 18 किलो शीशम की लकड़ी दी, फिर भी मेरा ब्रांड प्रीमियम नहीं लग रहा. एंड देन देयर इज इंफोटेनमेंट. उसके बाद आता है कि लाइक हाउ कैन यू मेक योर ब्रांड प्रीमियम. एंड देन द सेकंड कैरेक्टर कम्स एंड ही इज गोइंग टू फाइंड समथिंग इन हिज हाउस इज वियर्ड थिंग कि लाइक तुम्हारे घर में भी तो लकड़ी है. सो वेयर डज दिस कम फ्रॉम. ये तो खोजना कैरेक्टर्स ये तो these अपने lines is it your childhood, is it Agra, is it Lucknow, where is it from, where does this come I from, don't think it. or you've learned this from some. ये No, तो कहीं I'm से not- सीख नहीं सकते. No, I don't think. हाँ, सीख तो नहीं. ये कैसे सीखोगे हाँ, यार. मतलब I don't think you can learn this. घोड़े दे दिए ये तो नहीं सीख ना सकते. ये कौन सिखा रहा है. ये मतलब you have to be. It's more like, how do I say this? The more content creator that I become. By the way, which camera am I supposed to look at? This one. आप कहीं भी देखो भाई. आप अच्छा. मेरे को देख के बात करो. No, मेरे को नहीं but देख. if I want to look at the audience and break the fourth wall, कि like podcast ठीक लग रहा है आप लोगों को? So can I? इधर देख लो. हाँ, got. And then I can also. इसका वाला वीडियो से कैमरा ठीक लगा. Okay. I just want to. मेन फ्रेम भी है. Main frame that. So yeah, fine. हाँ. So I think. उधर देख के बस सब्सक्राइब करने बोलना है. तोड़ दिया फोर्थ वॉल अपने फायदे के लिए. So I think. सब्सक्राइब गाइस. ठीक है आगे बढ़ो. मेरे पास YouTube चैनल नहीं, so follow me. Ankit_SR. So I think I've realized more and more कि like it's good if you let out all the weirdness, right? That helps a lot as a content creator. Right? The more you are, the more you want But to. you were making static content. हाँ, ठीक है. तो वीडियो से कंफर्टेबल कैसे हुए. पहले से थे. नहीं था. Actually I struggled a lot. So the एक तो आपको इसके ऊपर बैठ के शूट करने का पॉडकास्ट. यार मजा बहुत आता. अगर मेरे को बैठने देता कोई मेज के ऊपर, I find it very like यार कुर्सी बैठा. No, साहब कुछ कर सकते हैं. हम नीचे बैठ के कुछ कर सकते. नीचे बैठ के करना. This is fine. Obviously, I'm used to it. So again, my people who work for me, हाँ. whenever they come and they join, they think अरे ऐसा थोड़ी ना होगा. So टेबल पे बैठ के थोड़ी देर बात करता होगा. It's only when they are talking to me in the office and suddenly I'll ask somebody to scoot over and then sit on their table. Is क्यों when बैठते हो टेबल पे. पता नहीं, टेबल का पसंद- काम टेबल पे चीजें रखना है. ये तो बाकी जगह है ना. इसका काम है. आपकी तशरीफ के लिए है ये. आपकी तशरीफ इसके लिए नहीं है. it actually started. चुल क्या है. मेरे को लगता है आप बहुत ही ना खुराफाती इंसान हो. चुल मतलब आपको चुल सुकून नहीं मिल रहा चाहिए. हाँ, जिंदगी में. इसको जिंदगी में सुकून नहीं मिल रहा है. भाई बंदे ने चेयर बनाया जीवन में. कह रहे नहीं भाई उस पे पैर इंसान रख दिया. बैठेगा उस पे पैर रख दिया. जिस पे सामान रखना चाहिए उस पे तशरीफ रख दी. बताओ इंसान. भाई चुल है आप में जीवन में. मेरे को समझ में तो आ गया. पता नहीं क्यों. I think I always enjoyed sitting on like high places. I don't know why. Like when I was younger, also I used to climb on the Almira or stuff like that. I always enjoyed. So now when I'm older, nobody's here to क्या stop me. बोल रहे हो. हाँ, I used to really enjoy like climbing the Almira for some reason. I don't- क्लाइंबिंग द अलमीरा. Yeah, very very nice. Like you sit at a very high altitude for some reason. उससे क्या होता है. It gives you a sense of power. और गिरने का डर नहीं है. एज अ किड I don't think so. कभी गिरे हो अलमीरा से. नहीं, thankfully नहीं. नहीं गिरे. हाँ, तभी तो आदत गई नहीं. किसी ने पीटा नहीं और किसी ने गिराया भी नहीं, तो बच गया. I think see this is the thing, right? So if you are eccentric, it's either very weird or you're eccentric.
and you have to find the right balance between being weird and being socially acceptable, and you become eccentric. Otherwise you can be an outcast as well. This is what I was getting to as well, कि like somebody making content, पॉडकास्ट से तो थोड़ा वैल्यू ऐड कर देते हैं ना, हम अपना कहानी का बताएंगे तो क्या होगा, बट एनीवन हु एंटर्स कंटेंट, द थिंग व्हाट दे स्ट्रगल विद इज व्हाट, लाइक यू विल नो इट बेटर देन आई वुड एक्चुअली, यू टू टॉक टू अदर पीपल एज वेल, कि लाइक the more comfortable you can become in front of the camera, the more you can become yourself, the more you can shed the idea that I'm in front of a camera, the better you'll become as a content creator. Right? The like किसी की एक्टिंग देखते तो आदमी क्या बोलता है, यार रणबीर कपूर यार बहुत नेचुरल लग रहा था उस रोल में. That's it. It's literally that. And a lot of actors have failed because they never look like they're the character, right? They always look uncomfortable. Same with content creators. A content creator only has to play one role, which is themselves. And it's funny that a lot of people fail in being true to themselves. And that is why they fail as content creators. कि like they have such like इतना रोड ब्लॉक है उनके दिमाग में कि like अरे पर मैं ये करूँगा, ऐसे तो नहीं बोल सकता मैं. Obviously there are some things that you should never, like you should not abuse, you should not say things which are not nice. Obviously you should avoid. Do you think using abuses is funny? I personally find it very funny. You find it very funny? I personally find it very funny. I never give gali to anyone. Like I've never said. बता दो. I will avoid for your channel to demonetize and stuff like that. But कभी भी I will like मेरे बारे में इतना मत सोचो, आप करो. But I've never like कि मैं किसी को कभी गुस्से में शायद ही ऐसा हुआ कि मैं तेरी बहन की, ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं. But I like to give abuses in the air. पूरा दिल्ली निकल के आ रहा है. हाँ, तो वो मेरी बड़ी गंदी, मेरी ज़बान एक्चुअली बड़ी ख़राब है इस मामले में. छोटी छोटी चीज़ों के फटी stuff like that. And हाँ, पता नहीं कहाँ मरवा के आया था मैं, यार पता नहीं कैसी किस्मत चल रही है. My language in that sense, again, a lot of the time that I spent in UP, I think it doesn't go away, right? And UP के बारे में कुछ बताओ, मजेदार चीज कुछ. मजेदार चीज, I think I've not been to. I'll be honest with you. Again, this is going to be diplomatic. I have not spent too much time in other states, but the thing that Screw diplomacy. नहीं बट सच में अरे यार, तो मेरा जो डेमोग्राफिक पे जो दिखाता है साउथ की जो ऑडियंस है, जो ईस्ट की ऑडियंस, उनको भी तो केटर करना है थोड़ी ना. अच्छा, प्रो क्रिएटर प्रो. I've seen the demographic. भाई क्या है डेमोग्राफी? I think so Bombay I have so Maharashtra I have most people that follow me from, and then second number Delhi. एक बार दिखा दो, ऑडियंस स्प्लिट दिखा दो. किधर से? फोन से दिखाओ ना. अब मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा और एडिटर लगा देगा. अरे अच्छा नहीं, ऐसे नहीं होगा, हम तो लाइव दिखाते हैं भाई. आई थिंक महाराष्ट्र दिल्ली. मेरा शो पे मेरे से कंट्रोल लेते हुए अंकित श्रीवास्तव, ये क्या मतलब? ठीक है बोलो, फिर मैं दिल निकलवाता हूँ. So I think mostly metro cities obviously, but Maharashtra, Delhi and UP, these are the three states where most of the audience comes from. It makes sense, right? Hindi speaking or at least pro Hindi audience will be more likely to follow me because I'll continue to speak a little bit in Hindi. Gender split क्या है? Gender split is I think 56% male, rest of it is female, around 50-50, very slightly. अंदर से क्या लगता है आपको, जेंडर स्प्लिट क्या है? वो तो डेटा बता रही है. I think अंदर से क्या लग रहा है? मैं बताता हूँ, जब मैं when I was making relatable content, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी. नहीं, जब मैं relatable, ये सब relatable बड़ा हैवी वर्ड यूज कर लो और फिर ताकि वैल्यू. जब मैं अपना ओरिजिनली जब अपना रिलेटिव वाला कंटेंट बनाता था, तब women were more of my followers, and when I switched to tech and infotainment, that is when more guys came along, and I know it for a fact because आज से एक साल पहले मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे, you'll see all of it is primarily women, and now you'll see primarily men. So I think the shift really happened when it came to पहले खुश ज़्यादा था तभी तो आजकल and I miss that. I actually miss that. Women are very nice to you. They're very caring in that sense. Guys are also nice. Guys are more like भाईचारे के लिए, but and they support a lot की like in the name of brotherhood. हाँ, they उनका वैसा वाला होता है कि भाई में टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी फॉलो करते हैं तो शेयर तो कर देंगे. Whereas women would probably not do that. They always give you credit on merit, but when you're going through a downfall as a content creator, your female audience is going to be very nice to you कि like he'll come back. आएगा ऐसी. हाँ, ये तो होता है. Guys are like कि नहीं, इसका डाउनफॉल हो चुका है, अब कुछ नहीं कर, अब भाई गए, ये धूल चाट रहा है. भाई पहले बहुत बड़े आदमी थे, अब नहीं रहे. So I think that happens, but I think both. But if you had an option, you could have all male followers, all female followers.
what would you pick? अरे तो जी तो जेंडर बायस हो गया, मतलब As a creator, there's एज अ क्रिएटर क्या होता है as a creator, if you had an यार? option to have all, because it's not, if you remove the gender bias, हाँ, you know that the audience behavior is very different या with male and female. Yeah. Like, so for example, क्या है बताओ? in my opinion, I think women are more likely to share to their रिस्पॉन्ड ऑल्सो. respond and share to their stories. I'm talking हाँ. very technically, so I'm removing all of the gender bias in the sense ki like कि लड़कियां अच्छी होती हैं, none of that. But in my own technical data, all I've seen is that women are more likely to share to their stories, whereas men are more likely to send it to a lot of their friends and probably send it to that one friend again and again. So what I've Oh. seen is that a guy would have like 3 or 4 friends that he is a part of a group of, and he'll keep sending the same person a lot of the reels again and again ki like ye dekh, right? Whereas women, I don't know if they're sharing as much to their friends or not, but they're sharing to their stories. So story reshare versus share DMs. DM shares, I think this is the biggest technical difference that I've seen as a content creator. This is an interesting insight. Yeah, I don't know. I don't understand the psychology behind it. I could be wrong as well. But this is my This is own. what you've seen with This is you. what I've seen in my own understanding. And we put a lot of effort into understanding data, by the way. We put a lot of effort into looking at ki, like how much did this video do, how much story shares, how much the engagement, was it high quality engagement, low quality engagement, did people tag other people or not, did people were they just using the CT? So वो physically देखते हो? Yeah, कोई metric तो होगा नहीं मेरे हिसाब yeah, से, yeah, मतलब कोई because tool है? no, Instagram has its own things, but it's not very sound, right? So you have to have a lot of gut feeling, matlab data to gut feeling. So we always keep at least, I have at least 2 editors like who work full time, and I now have one guy who's helping out a little bit with content syndication की, like YouTube Shorts पे भी डालना and stuff like that. I'm very bad at this. मैं बना दिया, वो किसी के Instagram पे डल जाए, that's a big deal because I'm too busy with my startup. So I hired a guy recently and he's smart, so he's also looking at the data and trying to understand what happens, why it happens, why does this video get shares ज़्यादा थे या saves ज़्यादा थे, what happens when you get more shares, what happens when you get more saves, likes के ratio में saves और shares जितने होते हैं उसके हिसाब से followers कितने आने चाहिए. We try to understand Very, very, very technical. Yeah, we try to make an Excel sheet. We keep an Excel sheet which is updated. We take all the data that comes from Instagram, we put in the Excel sheet, and we try to track what is happening, what is not happening. And we also keep looking at other creators as well a lot and try to understand like why is this guy doing really well, why is this guy doing really well. And So does that have to be necessarily in your niche? no, anyone who's doing well. I will look at anyone who's doing really well. तो अब तो and भाई भरा पड़ा है Instagram में. yeah, so we spend a lot, we waste a lot of time on that. कितना पैसा बन सकता है कंटेंट में, कंटेंट क्रिएशन में? इसका कोई सेगवे नहीं था, कोई पीछे मुझे अलार्म नहीं दिया गया. सेगवे फेगवे कुछ है नहीं. ये सेगवे तो हमने आज ही सीखा आपसे 10 सेकंड पहले. होता क्या है सेगवे? I think it really depends on like how much do you want Diplomacy incoming. 3, 2, 1 and go. अगर आप पैसा बनाना चाहते हो कंटेंट से तो बहुत बन सकता है. हाँ. है ना? क्वांटिफाई करना चाहें तो बेसिकली there are 3 ways to make money on. आपको नहीं बनाना पैसा कंटेंट से? I don't want to make a lot. I don't want to make content as my primary income source. I don't want to. Why are you building a shoe brand? It's a lifestyle brand. So Lifestyle brand. हाँ, we make sneakers, we make bags, we make wallets, right? हाँ. और वो सारा it'll all come on screen, right? Send the raw file to me. I'll make sure कि वो भाई आप ही एडिट कर दो ना. आप ही करवा लो. मेरे हिसाब से अगर आप इस एपिसोड का अगर आप रील्स निकलवाओगे ना, हाँ भाई तब वो मच बेटर वर्क. I think so. आप मुझे raw files भेज देना. I'll try. मैं भेज We've never दूंगा. tried this, but we think we can do something good with it. At least we'll try. मेरे से तो बेटर ही काम करोगे आप. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है. नहीं एडिटर के हिसाब से यार, आप क्योंकि आपके एडिटर को पता है ना आपका कंटेंट कैसा चलता है. We could try. We so should. कितना पैसा बन सकता है? Guy does not. He needs. उसको मालूम है मेरे को बिट कौन सा चाहिए, शॉर्ट कौन सा चलेगा. मैंने देख रखा है, मेरे को इस पे व्यूज आते हैं, मैं पूछूंगा क्या आपका ब्रेकअप हुआ है, क्या आपके पास पैसे हैं नहीं, सड़क पे आप गए थे नहीं गए थे. तो 3 ways to make money. One is brand deals, second is course, third is to sell products, which is to start a company. There is a big differentiator. I think जब ये लोग सवाल पूछते हैं तो बहुत generalize कर देते हैं. Infotainment creator will make different ways of money than a relatable or a general creator. General creator जैसे मान लो relatable creator, let's say for example take a Vishnu Kaushal for example, such an excellent guy, would not be able to launch a course because the audience is so vast.
maybe not used to हाँ एंड him वही doing वही a course. पहला तो नीश नहीं है कोई, क्योंकि ह्यूमर के केस में होता है कि हाँ ह्यूमर खुद में एक नीश होती है, बट लाइक आई कुड लाइक ह्यूमर बट आई एम वेरी यंग, आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, बट आई हाँ, कुड हैव सिखाओगे कैसे humor? वही एंड सो इट्स वेरी हार्ड टू टीच ह्यूमर How अदर to देन be funny like me? हाँ भाई इट्स वेरी हार्ड, यू कैन रियलाइज कि एवरीवन इज, सभी सीख रहे हैं, आप बड़े से बड़े अगर कॉमेडियन को भी पकड़ोगे वो भी शायद कोर्स ना दे पाए इसके ऊपर, सो दैट्स द हार्डेस्ट थिंग टू टीच. उसके अलावा द ऑडियंस नेवर केम देयर टू लर्न एनीथिंग, दे केम देयर फॉर एंटरटेनमेंट. For तो fun, अभी हाँ. नेटफ्लिक्स एकदम से अगर वो पॉडकास्ट के साथ वैसा वाला निकालना शुरू कर दे कि प्योर एजुकेशनल पॉडकास्ट, इल गेट लेस व्यूज, राइट. उसके ऊपर से अगर वो मास्टर क्लास निकाल दे तो वो पूरा नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म ही डूब जाएगा. हाँ. मैंने वो प्लेटफॉर्म खोला ही नहीं उस मेंटालिटी से. So an infotainment creator can have courses, whereas a relatable creator will not be able to do. तो पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा bifurcation आ जाता है. That other than brand deals, it's a very simple metric. कि like I think around 500K you can make around 4 or 5 lakh rupees a month. That is what I've seen. Most people are making. There are people who are making more than that as well. But you know, good months, bad months, अच्छा महीना, खराब महीना. That is the kind of money that I've heard people make. That is the kind of money. I'll not be diplomatic. That's the kind of money that I made some months. But like I said, I'm not the right metric because often I don't take ads. Often I say no to those things. I cannot also take a lot of ads, by the way. So for example, अभी recently we said no to 3 ads. One of them being a lifestyle brand I cannot take क्योंकि मेरा खुद का lifestyle brand है. One of them being again a denim brand that wanted to do a billboard and something, we had to say no because again it's a lifestyle brand. It would not look good. वही है ना, अमन गुप्ता अगर मान लीजिए, मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, पर अमन गुप्ता अगर JBL के ad में आएगा तो कैसा लगेगा? Right? That does not make sense. So that shows lack of faith in your own brand. So we cannot do those. A lot of relatable creators are able to do, like for example, I don't drink. I never do ads around alcohol. I have to miss out a lot of the ads. I think every year we lose around 10 to 15 lakh rupees by just not taking ads, which we cannot take. आई एम श्योर अगर कोई बहुत बड़ा क्रिएटर होता होगा तो पता नहीं कितना पैसा जाता होगा, क्योंकि अगेन आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर. सो इमेजिन एट 2 million अगर आप ऐसे सेलेक्टिव हो गए तो मे बी शायद आप 20-30 लाख रुपए का नुकसान करो. सो आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट बिग पीपल मेक, राइट, व्हेन इट कम्स टू नंबर वाइज, लाइक पीपल हु हैव 2 million 3 million. आई कैन ओनली टेल 500-600K के रेंज में मेरे क्या को पता है, चलेगा. कोई मैं किसी से बात करता है, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट वो ना, मैं उसको, ही इज एट अ मिलियन प्लस फॉलोअर्स नाउ, और मैं उससे बात कर रहा था कि ब्रांड डील्स को लेके, उसको लेके, तो वो मेरे को बोल रहा है कि दीपक, यू बीइंग एट 300K हैज अ हायर चांस ऑफ डूइंग मोर ब्रांड कोलैबोरेशंस देन मी बीइंग एट अ मिलियन फॉलोअर्स. मैंने कहा क्यों? क्यों? क्योंकि तेरे क्लियरली यू हैव फॉलोअर्स, यू हैव रीच, यू हैव पोस्ट, यू हैव एवरीथिंग. Why will the brand not come to you and why will the brand come to me? कहता है मेरी रील की जो कमर्शियल्स होगी, हाँ, उसमें उसको 3 मिड साइज क्रिएटर्स मिल जाएंगे. या दैट्स ट्रू. 300K वाले 3 मिल जाएंगे या 1 मिलियन वाले के लिए, प्रॉब्ली लेसर. या एंड रिस्क के चांसेस भी कम हो गए ना. या टैंक अगर प्लस ऑडियंस डेमोग्राफी, प्लस लाइफ स्पैन ऑफ अ ब्रांड डील. अब मान लो 1 मिलियन वाले के पास, जैसे मान लो आपके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स है आज, मैंने आपसे ब्रांड डील करवाई, आपने आज पोस्ट कर दिया, कितना टाइम तक चलेगा वो रील? 24 घंटे मैक्स. बहुत 24 अच्छी रील घंटे. हुई तो हफ्ते चल जाएगी. हाँ, वो बहुत, इट्स एन आउटलायर. हाँ भाई, लेट्स मतलब बी बहुत वेरी अच्छी रील. ऑनेस्ट. हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छी, ब्रांड से मतलब तो निकलती नहीं है बहुत पहले. अच्छी. हाँ, ब्रांड से तो मतलब हाँ, मुझे बुरा लगता है यार उनके लिए, हाँ, कि उनके लिए कितनी भी कोशिश करो वो वाली रील तब तो बिल्कुल नहीं चलती. नहीं चलती ना भाई. हाँ, वो वो नहीं मतलब चलती. वो हमारा क्रिएटिविटी थोड़ा दब जाता है, जो भी हो. तो या सो वेराज 300K वाला कंटेंट पीस ऐसा है कि उसको, क्योंकि ऑडियंस अलग अलग है, 3 लाख 3 लाख 3 लाख अलग अलग ऑडियंस है, उसको अलग 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 टाइम पे अगर पोजीशन किया जाए तो अवेयरनेस भी है, वर्ड ऑफ माउथ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग कि फॉर मी टू ग्रो, बिकॉज आई एम एट दिस नंबर, I'm not being able to do more brand deals. So सक्सेस में भी प्रॉब्लम है भाई. भाई साहब के व्यूज कैसे थे? ये जो बढ़िया 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 थे. व्यूज बढ़िया थे. हाँ, मतलब 500,000 एवरेज. 500,000 एवरेज तो फिर अच्छे थे. हाँ, राइट. तो फिर कुछ. so he's being able to do deals, but मतलब the only thing is the brands would not every brand will be able to pay that he's charging. So that becomes an issue. So I think with brand deals, what I've seen is that, this is my personal opinion, I'll not talk the numbers, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, but I personally like to charge a little less than the market rate for a simple reason that it eases the tension between me and the brand. Okay. Whereas if you sort of, so here's an example. This is why I say कि मेरे को ना content से, I don't want to make it my primary job. Let's say for example you can charge X amount of money, which is the standard.
if you want to push, you can charge X plus 20K for example. Hmm. This is what you can push for कि like अगर मैं थोड़ा हैगल करूंगा या मेरे बिहाफ पे एजेंसी हैगल करेगी तो मे बी 20,000 और मिल जाएंगे, 30,000 या मे बी 50,000 और मिल जाएंगे. 50,000 वैसे बहुत पैसा होता है भाई, हाँ, राइट? मतलब हाँ. I worked for 20, my first job was maybe 18,000 20,000. So you can imagine कि एक डील में आप उतना पैसा आज के टाइम पे छोड़ सकते हो. It's a big money. It's such a privilege by the way. Such a है ना? बहुत मतलब I think any content creator this could be wrong. यहाँ तो डिप्लोमेटिक होने का मन नहीं करता. मैं तो पता है फ्लिप होता है ये सोच के कि मेरे को बस एक स्टोरी डालनी है. तो सोच के देखो, हाँ, मतलब मुझे अपनी महीने की 2-3 महीने की सैलरी शुरुआत की मिल जाएगी अगर मैं एक स्टोरी डाल दूँ. बट इट्स द क्रिएटर्स एफर्ट एंड द वर्क Yeah, दैट for गोज sure, ऑन. for मतलब मैं तो 5 साल से कर रहा हूँ. हाँ. कुछ लोग आप 3 साल से कर रहे हो, कुछ लोग 10 10 साल से साल कर रहे हैं. वो वही तो कहीं ना कहीं द पर्सन हैज टू गेट हिज ड्यू. Yeah. Also, so there are two flip sides to it. One, that creators should not crib in that sense because they do get disproportionate money. Same way as actors get. So it कभी अच्छा नहीं लगेगा अगर करो तो आप. Sorry. जोर से बोलूं? पास में कर लो. आय हाय. अभी तक गड़बड़ चल रहा था. प्यार मोहब्बत करूं? यार वो एक बार अंकित भाई कर दो कुछ. नहीं तो ये गेन बस बढ़ा देता अगर एक बार कुछ. अच्छा, नॉइस का मतलब बंदा गेन नहीं बढ़ाएगा. बंदा गेन नहीं बढ़ाएगा, हमें पास में आना पड़ेगा. ऐसे करो बात भाई, ऐसे घुस जाओ अंदर. यार ये ना वो वाली आदत नहीं पड़ी अभी. Actually, क्या आदत? what I did was throughout the talk I actually sort of kept moving away from it. जितना पीछे हो सकता था मैं. So I पास think आना है भाई, पास. So I think थोड़ा और पास आओ, मतलब माइक से. Yeah. If I do more then I move my head a lot when I talk. So I think that is why I'm trying to बड़ा बुरा लगेगा अगर मैं लड़ गया. ये नहीं. Yeah. This is fine. Okay. So देखते हैं अभी 5 मिनट बाद देखेंगे. फिर और भैया क्या चल रहा है. Anyway. So I think on one side I don't think content creators should crib in that format because we do make sometimes, at least जब महीना अच्छा चल रहा होता है, sometimes you look at the money like, and especially because I did not initially do brand deals, so जब मैंने खुद देखा तो I was very surprised क्योंकि you can make a lot of good money. That being said, what the thing that audience does not understand is कि like you are any content creator is in a job where every day you're tested, which is very bad in that sense कि like हर दिन आपका job की worth is decided by the reel or your content piece doing really well or not doing well, and it's a terrible way to work. है ना. कितने मतलब मेरे को बड़ा खराब लगता है भाई, जहाँ मतलब पब्लिक ओपिनियन है, जब मन ले लो कि हाँ यार ठीक है इसके तो व्यूज दिख रहे हैं. देखो पिछली रील उसकी 2 लाख पे थी, अभी ये 2.5K पे अटका पड़ा है. तो कहीं ना कहीं it's probably the loneliest job ever. Yeah, it's the, how do I say this? I think this is what people don't understand because I spent, by the way, I'm saying this with a lot of authority here because I've worked most of my life, worked a job. For 2016 I graduated, right? 17, 18, 19 I had a proper job. And only after that I started making content. I still have a job because I work as a founder and I have a team and I have to take care of that. So I cannot do the typical content creator thing कि दोपहर में बहुत देर तक सोते रह गए या any of those things, जो creativity के लिए by the way बहुत अच्छा होता है. If you can work late at night, best for creativity. I cannot do a lot of those things. I still continue to have a job. You still sleep very late? I sleep very late, but I sacrifice. I think you sleep in the mornings only. I sleep at 4, 4:30, 5 बजे. Yeah. The perfect window for sleeping that I found is around 4:30 and then wake up at 10. So then you get. उठ जाते हो 10 बजे फिर? हाँ, पर मतलब ऐसा बेसिकली लॉजिक ही होता है कि टीम्स 11 बजे तक सब लोग आ ही जाते हैं. तो अगर मैं मतलब 4 बजे सोया हूँ, अगर मैं बहुत गहरी नींद में भी हूँ तो भी 4 बजे जब पहली घंटी बजती है, जब कोई आता है तो अपने आप ही एक अजीब सा सेंस ऑफ ड्यूटी फील होता है कि यार somebody is working for you has come to the office, you should also wake up. So unless I am unwell या मतलब कोई बीमारी है तो अलग बात है. Otherwise whatever time I sleep at, even if I sleep at 7, the minute somebody starts coming in, I wake up, I take 30 minutes to drink coffee and stay in my own office, and then I'm active around the office. But you don't meet like a lot of creators. Why is that so? I don't meet a lot of creators because you are entrepreneur first, creator second. No, none of that. ये तो हो गया. वो तो मैंने फोन पे बोला था. Structured answer. अच्छा. वो तो मैंने फोन पे बोला था. वो रियलिटी नहीं है मतलब. Actually मैं पॉडकास्ट में सच बोलता हूँ, फोन पे मैं बहुत झूठ बोलता हूँ. अच्छा. On camera.
ऑन रिकॉर्ड सच्चाई बात. I think the reason why I don't meet a lot of creators is that initially I did not see any value in it. अभी लगता है वैल्यू अभी मिलना शुरू किया है. अभी मिलना शुरू किया है और again I don't see value in it, but I at some point I realized that I would like to make friends with people who are making content now, because obviously I struggle a lot with content. So like speaking with somebody like you in itself is very nice for me. Like now I can talk to somebody who understands a little bit of what I'm going through. We will have our own different ways of interpreting it, but at least you'll have some understanding. But for the first 2-3 years I had nobody like that. And initially I thought I don't need, but now when it becomes difficult, I think when you have a difficult phase as a content creator, then you start craving कि कोई किसी से मैं बात कर लेता इसके बारे में, maybe कुछ insight निकल आता, हाँ कोई help हो जाती. So initially I was wrong, I did not see any value in it. But I think as you mature you realize you need people know better than you. Somebody is seeing some insight जो तुम्हें नहीं पता. You should talk to them. And also in like public events when I went and I spoke to content creators, I realized most of them are nice people. हाँ वही most of, at least to your face, they're very अंदर पता नहीं पीछे जाके क्या बोले सामने तो अरे भाई मिलते हैं, अरे यार कल आप दिल्ली में रहते हो, अरे आप दिल्ली में रहते हो, अरे मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या करे, मिलना है नहीं. नहीं काम कुछ हो रहा नहीं. वो तो इवेंट वाला. I think that is where, by the way, podcasting, that in that sense such a excellent, like you and I get to meet, we get to talk, we're talking about the things that we would anyway talk. Like, literally this is the ये हटा दो mic तब भी हम यही बात करते हैं. Right, there is no pressure like that. And then we're also working, so it does not feel like guilty भी नहीं feel होता. And there is a, how do I say this, there's a work related obligation to it as well कि चलो आधा घंटा ही सही लेकिन टाइम से आ जाए आदमी और मिल भी लेगा. It's the perfect blend. हाँ, perfect blend है. To like to socialize, meet, and to be in touch with people and to network. By the way, again that's excellent, right? Either me going on podcast or you having a podcast, almost the same thing. Yeah, same thing. As a matter of fact, it's better for me because I get to speak more, right? With the guest के साथ, I think host के साथ ये वाला issue है कि you would not get to talk as much on your podcast. Yeah, of course. Or you'll become Gary Vaynerchuk, who you've seen Gary Vaynerchuk. He's like, तू चुप, मैं बताता हूँ. He'll ask a question like how much money he makes, this much money. Literally stops the person from talking. खुद के पॉडकास्ट में खुद ही बात कर रहा है. खुद ही के पास उसका गेस्ट होस्ट होता है, उससे सवाल पूछता है, फिर वो अपना बताता है. उसका भी समझ में नहीं आता है, पर चलो ठीक है जो चल रहा है. He's a legend because he started everything very early. He was डिजिटल मार्केटिंग से शुरू किया था. Anyway, let's not go there. हाँ वही मेरे को ये बताओ अंकित भाई, because you're building a D2C brand, तो प्यार नहीं हुआ होगा आपको. एकदम ऐसे इसी तरह का सेगवे आता है. इसी तरह का सेगवे आता है. अब आपने बोल ही दिया है. अरे यार, मैं थोड़ा सा सीरियस होना चाह रहा था, लेकिन अंकित भाई चाहते थे कि मैं प्यार की बातें करूं. अंकित भाई को पहले से ही प्रॉब्लम थी पास आने से. तो बताओ. नहीं तो वो तो सच में नहीं हुआ. प्यार नहीं हुआ. हाँ, टाइम नहीं मिला. प्यार कैसे नहीं? प्यार तो होता ही यार. कैसा मतलब वो जैसे सामाजिक वैसा वाला कि मतलब सामाजिक प्यार क्या होता है? मुझे समाज से प्यार. अरे यार, सामाजिक प्यार नहीं. आप मतलब आई एम श्योर you've gone to college also. हाँ, you have met people. College only boys तो नहीं होगा. नहीं. My school was also co-ed. School was co-ed. Yeah. College was co-ed. Yeah. World is also co-ed. हाँ, world is सबसे बड़ी बात थी जो भी ये co-ed का बहाना बनाते हैं. तो बताओ फिर, कुछ बताओ कहानी. अरे I did not get the time to, I think, how do I say this? You did not get the time to fall in love. Is that what you're saying? Yeah. I don't believe this. Yeah, matlab I selectively fall. Are you an introvert? I don't think by true definition, no. So like I'm very good. True definition मतलब आपने Wikipedia रट लिया है. हाँ, वो जो मतलब किताबों में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से तो मैं नहीं लग रहा था. लेकिन I think so. A true introvert would technically be somebody who enjoys being on their own and is comfortable in only people that, comfortable with people who they already know. So I think this is what people misunderstand about introverts. इसके लिए अरे वो तो बात ही नहीं करते, ऐसा नहीं. अगर आपको लोग पसंद हैं
तो उनके सामने आप एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, राइट? दैट इज व्हाट। इंट्रोवर्ट पे भी आपने कुछ तो रील बनाई थी बहुत मेरे बनाई हिसाब से, वही। बहुत ही क्रेजी रील है भाई। एक्चुअली तो अब आ इंट्रोवर्ट, जाओ। एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, इस ये तो मेरा मतलब एरियाज ऑफ एक्सपर्ट, कुछ एक आध साइकोलॉजिस्ट भी हटा दो तो मैं आगे आ जाऊंगा. अरे बढ़िया So, भाई. but अब I think the way, again it's a very cliched word, but I think I would rather fall in omnivert or ambivert category, where I'm very able to switch. Like even if I don't know people, if you put me, I think I would say I'm a performing introvert. An introvert who is good at performance. So like I would like to stay like I'm extremely introverted in the sense that I sometimes not leave my house for like 6 days. 6 दिन 6 दिन अपने घर के अंदर ही हूँ, क्योंकि काम इतना ज़्यादा, मतलब नीचे गया वॉक करने के लिए, जिम के लिए, बट नॉट मीटिंग पीपल, नॉट गोइंग आउट, कि जितना. एंड एब्सोल्युटली ओके विद इट, लाइक यू डोंट हाँ फील द मतलब नीड अगर टू, नो नो नॉट ऑल. ऐसे यू विल नॉट कॉल पीपल कि अरे ब्रो बात कर ले, ऐसा नहीं नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली आई अच्छा. आई क्वाइट एंजॉय. अगेन इट कम्स अ लॉट फ्रॉम बीइंग बिजी बाय द वे, but it also comes a lot from preference, but being busy is one thing which I. ठीक है, अब बताओ. So I think a performing introvert is what I would fall into, where हाँ. ki I know ki I have to perform, right? As the, if I want to be an entrepreneur, if I want to be a creator, और मैं stage पे जाके बोलने से घबराता हूँ, so then that is not going to be, you know, conducive with the kind of job that I picked. So I'm like, अच्छा ठीक है, इसको काम की तरह कर सकते हैं. मतलब अगर इवेंट है मेरे को बुलाओ, आऊँगा. I will not even be scared by if you put me 30,000 people in front of me. I've never had any of those issues कि अरे मैं घबरा गया, ये वो हो गया. I used to have, but I fixed it. That being said, when it comes to, I was going to die, I was trying to see कि अगर ये relationship वाला मुद्दा छोड़ दे तो मैं बच जाऊंगा. नहीं नहीं, ऐसा कैसे? The way I've done it, I think it's wrong, by the way. I'm aware of my own faults. If ever there was an opportunity to be in a relationship, or a relationship was to start, I have actively sabotaged the opportunity to be in a relationship, Why? because The key word here is actively sabotaged. I have personally actively, Why? like in retrospection I know कि मैंने खुद से काटा होगा क्यों? अपने, because literally हाँ अपना काटा है खुद का. तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? ऐसे भी बंदे हैं. तुम मेरा क्या बिगाड़ो? बेस्ट फ्रेंड मेरा Why क्या should I give बिगाड़ेगा? the power to you? तो it's only because of Self work. destruction. It's literally work. Like it's I'm not that smart. The things that I do, I'm not as skilled or talented to do it. Right. So designing a sneaker, for example, I've never done product design. I had to learn product design from scratch. Website design, I did not know. I learned it from scratch in, I think, 2020, 2021. Like within 1 year, I had to learn UI, UX, and visual design. So I did not have a designer. I did not have money to pay a designer. It did not feel like it. I knew I could be a good designer. Now I'm quite standard as a designer. Like I have worked for people now. I've done freelance, all of those things, and quite good designer, by the way. Out of vanity, I can say. But all of these things I had to learn in a very short period of time, because you know, this is the kind of work that I wanted to do. So in order to achieve a couple of goals in the short duration, I made decisions with the logic ki I will have time for this later, if I can just get the work done right now. Do you regret that? I think I've started to. शादी हो गई उनकी? कईयों की. Actually, कईयों की. है ना? And I for some reason I'm the अंकित biggest. भाई के WhatsApp पे आ रहा है invitation. Invitation आ रहा है, and I think I've been उस पे the भी आपका वीडियो बन रहा है. उस पे and Brand book. I've been the biggest magnet in that sense when it comes to, for some reason, women No just, flex at all. women getting married. This is the worst flex, by the way. Women who are about to get married really find me attractive for some reason. Right before the right time before them planning to get married, or they're getting married. इसमें तो खुश नहीं होना चाहिए आपको. हाँ मतलब कोई खुश नहीं कह रहा, कोई खुश होने की बात नहीं है ये, कोई अच्छी चीज नहीं है. And इसमें तो कोई खुशी की बात नहीं है. not like they're cheating on somebody. It's like Yeah, yeah. basically most of the women. But what if? हाँ, who knows? Yeah. तो मैं तो अपने काम के चक्कर में बच गया वैसे भी. But I think that happens a lot. But regret है. हाँ, अब थोड़ा माइल्ड रिग्रेट तो होता. बढ़िया भाई, आई थिंक काफ़ी बातें हो गई. आप मेरे से एक फॉर्मेट, शो का फॉर्मेट तो चलो ऐसे कुछ है नहीं, बट द फॉर्मेट इज सच दैट द आउट्रो में आप एक सवाल पूछ लो मेरे से. हाँ. और फिर ख़त्म कर देंगे. मैं एक सवाल पूछूं? हाँ, क्योंकि अब मैंने तो बहुत सवालें पूछ ली ना भाई. आपने डिप्लोमेसी मैक्स दिखाई है बहुत सारी चीज़ों में, क्या करूँ? आप मैं तो इतना सेफ खेलने आया था मैं. नो सेफ तो नहीं खेल सकते ना भाई. यू शुड हैव लुक्ड अस अप. यू शुड हैव लुक्ड मैं कैसे घुस जाता हूँ गेस्ट के दिमाग के अंदर. बट ठीक है, इट्स ओके. कोई बात नहीं, ठीक ठाक जाएगा पॉडकास्ट. कोई बात नहीं.
बाद में एडिट्स में क्लिप्स डाल रहे हैं या वॉइस ओवर डाल रहे हैं कि यार इसमें व्यूज नहीं आ रहे इसके शॉर्ट से, अलग से डब करा रहा है फिर से कि बताओ पूछो एक सवाल पूछ लो। एक तरफा प्यार हाँ, की ताकत कुछ और होती नहीं है। नहीं, कोई ताकत नहीं होती उसमें। कोई ताकत नहीं होती, इससे बुरी चीज आप अपने साथ कर नहीं सकते। अगर आपने अपना समय ये औरों की मूड तरह 2 हिस्सों में नहीं, सिर्फ मेरा हक है बांट इससे। दो भाई उसको, 4 हिस्से बांट दो, मुझे मत दो। अच्छा पूछो तो सही। एक तरफा प्यार हाँ में इंसान यदि फंस गया है हाँ तो उसे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? मेरे से पूछ रहे हो ये सवाल, क्यों? रैंडम तूने वो सवाल पूछो, है ना? मत करो प्यार और क्या, आगे बढ़ो, मूव ऑन। ये जेन्युइन आंसर नहीं यार, मतलब अगर आदमी सच में फंस गया है, मूव ऑन। कैसे कब तक लिंगर करोगे कैसे भाई? कैसे यही तो, भाई स्टे। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं दिस इज क्रेजी। पता है कल रात को यही बातें हो रही थी मेरे घर पे, मेरे घर दोस्त आ गए थे 2-3 भाई, और वो यही सब रात के 2 बजे यही बातें होती है ठीक है, सब अपने दुखियारा लेके शुरू हो गए, और उस पे भी बात मेरे पे आ गई, मैं ज्ञान दे रहा हूँ एज इफ आई एम सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्सुआ इन दिस अब एक रिगार्ड। तरफा प्यार। हाँ, मैं कहा नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा हेल्प, बट आई थिंक कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, डू थिंग्स दैट यू लव, टेक अ ब्रेक इफ यू वांट टू, पहाड़ों पे चले जाओ, बीच पे चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ, टेक अ ब्रेक, वर्क इज द बेस्ट डिस्ट्रैक्शन आई फील, immerse yourself in work, and couple of friends, not many, 1 or 2, who will give you the right advice no matter what, who will be very upfront in your face that Ankit you're doing wrong, tu galat kar raha hai, you're beating yourself down, you should not do this, please don't do it. Spend time with them because that's more important, and if it will not be easy of course, but when you see that there is no reciprocity, I feel you should get that hint, and मतलब अगर आपको रहना है तो फिर रहो उसी तरह जिंदगी भर, उसका तो कोई आंसर ही नहीं उसका है, तो कोई आंसर नहीं एंड है। आप यू कैन नॉट फोर्स लव। A lot of people romanticize one-sided love, by the तो way. करने तो मूवीज वही है, वही मतलब एक literally तरफा प्यार की एक ताकत तरफा कुछ प्यार, और and होती है, तो वो तो फिर रोमांटिसाइजेशन है, बहुत मूवीज हैज You- रूइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। why you realize, right, ki like why do they do it? Because it's easier to tell people, because it's hard, the solution is very hard to get out of it, it's very hard, Yeah. right? So I'm going to say the pehla non-diplomatic word. So one of the, even if you want to become a guru, हाँ चाहे आपको गुरु बनना है, चाहे आपको कंटेंट बनाना है, आप चाहते हो चले, and you want to give somebody solution, there are only 2 solutions you can give a person. One is the actual right solution, but the problem is to implement the right solution, you need a lot of effort to teach that person. Even an 8-hour course on how to get how to get out of ek tarfa pyar is हाँ, not going to be enough. You need right. to probably coach that person in real life. हाँ एक step बताना पड़ेगा. You can't do that. Whereas if I just say अच्छी चीज़ है, करो, आपको मजबूत बनाता है, आपने सोल्यूशन वो दे दिया जिसमें आदमी पहले से ही है। कोई आदमी आके बोले यार मेरे पास पैसा नहीं है, हाँ मैं बोलूँ गरीबी में ही खूबसूरती है, हाँ तो आपने नाम का सोल्यूशन दे दिया, है ना? सोल्यूशन वही है जिसमें वो पहले से था, आपने एक लाइन के ऊपर सॉल्व भाई आपने रियलाइज किया सेम बात को अगर आप भारी टोन में बोलोगे हाँ, तो वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट अरे करता है। हाँ थोड़ी सी आवाज अगर और हमारी भारी हो जाती है अगर, तो मैं तो करता हूँ वॉइस ओवर। हाँ मतलब अच्छा हाँ वॉइस ओवर में थोड़ा पॉसिबल होता है, हाँ और अगर और बढ़ा लें, वेलकम टू ओह, द चिलर। इससे इससे ही भाई साहब बताओ, 50 मैं के वेलकम ही views, किया अभी, वेलकम ही किया है, आपके 50 मुंह में के घी views, शक्कर भाई। हाँ, 50 के एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऐसा बोलो, एक्स्ट्रा भाई, Only 50 50 के तो- नहीं से उतने से कुछ नहीं हो रहा, उतने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था। But I think that is the saddest thing, by the way. I was actually was planning to write a book, and this is one of the chapters that I was actually thinking about कि like हाँ तो वही है भाई, वही। दिस इज व्हाट आई थिंक अगेन, मतलब immerse yourself in work, and work I feel is the best distraction, because you will always keep going back to that same person where you're not getting anything from. yeah, Do you want to keep getting sad again and again? Is that the motive of your life? No, right? मन नहीं मानता ना हाँ लोगों मन का। नहीं मानता, वही वही। वही बात। Because the more I write that chapter, the more I ask the question हाँ। in my own head. I have this conversation as a fake podcast. Is that ये सारी बात बोलने के बाद आदमी कहता है यार मन नहीं मानता. Which is that you've been in one side love? You've liked somebody that did not like you back? No. Oh, you wouldn't get it then. I've been there for a short period of time. Not now, but बहुत पुरानी बात है. I think back when I was in college, something I really liked a girl. She didn't like me, something like that. So I understand कि like it's कितना भी logical advice. But I think I've partially been there. हाँ. हाँ
तो you realize कि like I मन नहीं understand, मानता, and हाँ मतलब हाँ. कितना भी आदमी को लॉजिक दे दो, मन नहीं बट मानता. मन तो फिर कब तक रोगे? वही वही ना, वही बात है, कब वही है. तक? और जब निकल जाओ, द ट्रूथ इज आई थिंक यू एंड आई कैन नाउ कैन से, बिकॉज ऑब्वियसली हम दोनों ही उसमें नहीं है, कि हाँ जब निकल जाओ तो बड़ा सुकून मिलता है. हाँ, So, एक बहुत बड़ा बोझ हट गया. है दिस इज ना? द ओनली थिंग आई कैन टेल एनीवन कि यही लाइक, है. कि जब निकल जाओगे ना, जब भी निकल जाओगे, मे हम्म. बी इट टेक्स लाइक 1 year 2 year वॉट एवर टाइम इट टेक्स, मे बी 3 months 6 months, जिस दिन तुम सच में निकल गए इससे बाहर, ओहो, ऐसा जैसे ना दिमाग में से 30% ब्रेन जैसे ऑक्यूपाइड एक चीज से था, फ्री हो गया. फ्री हो गया, अब तुम इसके और में लगा सकते हो. ये किसी ने मेरे को बोला था, थिंग अबाउट फियर इज, से यू आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, think about who you'll become after you've conquered the fear. Very profound, very profound, very profound. very profound. But genuinely, matlab, if you think about it that way, ki think about the kind of person you'll become after Once you've you conquered the fear, which is yeah. crazy. Like the thought of it is fantastic. Yeah. So वो है. True. बढ़िया भाई, आप ही आउटरो कर दो. आउटरो है क्या? आप अगर बात समझ में आई तो बोलिए अच्छा आदमी. अच्छा, अगर बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी. मैंने दोनों में देख के बोल दिया. एक सेकंड यार, किस पे बोलना है? इस पे बोलना है, इस पे बोलना है, उस पे बोल. मास्टर क्लोजअप पे बोल दो भाई. एक बार अच्छा बोल दो, एक बार घटिया वहां बोल दो. अगर बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो बुरा भला बोलने की कोई जरूरत नहीं है. बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. और सब्सक्राइब करने बोल दो, दीपक पारिक नाम का चैनल है. ये ऐसा कुछ आप केवल अंकित _SR एक इंस्टाग्राम चैनल, वहां जाए, शैडो बैन करवा दो. वहां जाओ केवल. शैडो ये बैनिंग सब आज के जो क्रिएटर्स हैं ये सब आपको मिसलीड कर रहे हैं. आज के, हाँ आज आपसे पहले से बना रहा हूँ. वेटरन हूँ मैं. जो आज मुझे मिले हैं जो क्रिएटर्स, वो हाँ, आपको मिसलीड कर रहे हैं. हाँ, ऐसे कंफर्टेबल होके बातें कर रहा हूँ. बताओ तो यही तो गलत बात है. देखो गलत क्या है? बंदा ठीक से बैठा तक नहीं है, बताओ कोई बात होती है? फॉर्मेट नाम की चीज होती है. ना ना ना, ना कोई फॉर्मेट नहीं है. वही एग्जैक्टली माय पॉइंट. थैंक यू. एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. ये चलती रहेगी. आपको लग रहा है आप हमें से कुछ वैल्यू मिलेगा, बट इसके बाद कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा. सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल. I will link Ankit's Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, Bumble in the description. Please check him out. He is in dire need of right swipes. Please give that to him, and I'll see you guys in the next episode. Till then, it's a wrap. Thank you.